Hello guys, welcome to my channel. So guys, in this video I am showing you how to draw a beautiful acrylic painting with Eiffel Tower. So guys, it is very easy for beginners and you can definitely try it. So guys, if you try it, so tag me in Instagram. So let's start the video. First I am using here white canvas board and its size is 8 inch into 10 inch. And now I am using here Prussian blue and mixed there some white acrylic color and finally mixed it. So now I am applying here. अभी मैं यहाँ पर वाइट एक्रिलिक कलर से राउंड करके क्लाउड्स बना रही हूँ एंड ये बहुत ही इजी है, आप ट्राई कर सकते हो। राउंड करके आपको करना है। एंड अभी आपको एक ड्राई ब्रश से इसे ब्लेंड करना है, तभी ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। और थोड़ा सा वाइट कलर लेके उसके ऊपर से यूज़ करना है। सो अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डीप पिंक कलर से मैं यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फ्लावर की जो ट्री है वो मैं बना रही हूँ। जो कि आईफल टावर के पास ही होता है। एंड ये बहुत ही इजी स्टेप से आप बहुत इजीली कर लोगे। सो नाउ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाइट एंड पिंक मिक्स करके लाइट पिंक शेड। एंड अभी मैं यहाँ पर रेड यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। और अभी मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रिलिक कलर से चेरी ब्लॉसम ट्री का जो पार्ट है वो मैं बना रही हूँ।
सो अभी मैं स्केल से एक लाइन खींच लिया एंड अभी मैं पेंसिल एंड स्केल की मदद से जो आईफल टावर की जो टॉप है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सो आप ये ट्रेसिंग पेपर से भी कर सकते हो, बहुत इजी होगा। सो अभी मैं ब्लैक एक्रिलिक कलर से आईफल टावर को पेंट कर रही हूँ। बहुत ही इजी स्टेप्स है। सो गाइस अभी मैं आईफिल टावर के पास में जो ट्रीज होता है मैं वही पेंट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट यूज़ किया है लाइट ग्रीन कलर एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ क्रोम येलो कलर। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर डीप ग्रीन कलर। और थोड़ा सा मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ इसको और रियलिस्टिक लगने के लिए।
So guys, this is the final look, this painting, and I personally very like this painting. So guys, how is the video? Please comment down below, and if you like to watch this video, so drop a like and share your friends and family. So guys, if you want to talk to me, so follow me on Instagram. Thank you so much for watching.